Hi guys, welcome back to your channel Hit Hack Idea and Trick। आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया लेके आपके लिए। बट उसे शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आपके लिए कुछ नया करने जा रही हूँ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ सितंबर, विच इज़ कॉल्ड स्पीडी हिट। वॉच टिल एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स ऑन दैट। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है बेस्ट एवरीडे नाइफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी हैव वैरायटी ऑफ नाइफ फॉर सेवरल यूजेज, बट गाइज नो मैटर हाउ मच वी इन्वेस्टेड, we never were satisfied. But in later stage, my husband ordered few knife of Victorinox based on his experience with Swiss knife. This Swiss knife is also made by Victorinox. It has multiple usage in our daily life. Like we use it to open bottle, it acts as a can opener, also used its knife for cutting, and we also carry it while traveling anywhere. So this has multiple usage and it's very durable. Just because इस Swiss knife के साथ हमारा experience बहुत ही अच्छा था, my husband researched out and he kind of found those knives and he ordered it. And since then guys, हमें दोबारा किसी और pair of knife की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, those two on left are just ordinary knives. ये देखने में बहुत sharp दिखते हैं, लेकिन I'll show you the comparison on a later part of this video, wherein those on left hand side are 3 knives of Victorinox. हमने इसे 3 की सेट में ऑर्डर करा था और ये आज भी उसी तरह दिखता है जिस तरह हमने इसे ख़रीदा था। इन्हें यूज़ करते हुए हमें करीबन 3 साल हो चुके हैं। इनके ब्लेड में Victorinox लिखा होता है और इनके जो हैंड होती है उसमें स्विस मेड लिखा होता है। आई एम नॉट श्योर आपको कितना क्लियर दिख पा रहा है या नहीं, बट ऑल द ब्लेड्स एंड ऑल द हैंड ऑफ दीज नाइफ्स विल हैव द ओरिजिनल मार्क फ्रॉम Victorinox. Guys, please note that this is not a sponsored video. I'm sharing this info because lots of our relative and friends have asked us like ये knife कहाँ से खरीदा, कौन से ब्रांड का है, and they have also used it and opted it. So I thought why not to share it with you guys. This could be a good idea and also will help you in your day-to-day life. So that's why I'm sharing this particular information with you. Before we proceed, there is a small disclaimer. Guys, इनके blades बहुत ही sharp हैं. Please keep it away from your kids. It should not be played with. Now I'll show you the difference between an ordinary knife and Victorinox. So पहले शुरू करते हैं ordinary knife से। जैसा कि आप देख सकते हो, I'm trying to cut a tomato, but मुझे थोड़ा pressure और effort लगाना पड़ रहा है एक टोमेटो को काटने के लिए भी। Wherein when I'm using Swiss knife, the things will be different. Let's try chopping it with the ordinary knife and then I can show you how it works with Victorinox. I'm using Victorinox knife to cut the other half of tomato. आप देख सकते हो कि ये क्या smoothly काम कर रहा है and it makes my work little bit more easier. मुझे कोई भी effort अपने तरफ से नहीं लगाना पड़ा है and it runs so smooth. Let me try and show it with an onion. Now I'm using another ordinary knife to chop this onion. मुझे बहुत ज़्यादा effort तो नहीं लगाना पड़ा है, but हाँ, मुझे लगाना पड़ रहा है। I have also sharpened this knife before taking the shot so that it run a little bit more smoother as compared to what it was earlier. और हाँ, मुझे इसे regular sharp करना पड़ता है. For sharpening a blade, I will show it to you on a later part of this video. Now let's use Victorinox knife and just try chopping this onion with another knife of Victorinox. So you can see ये कितने smoothly cut कर रहा है और मुझे कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। आप जिस तरह से चॉप करना चाहते हो ये बिल्कुल उसी तरह से चॉप करेगा, even finer than what you can get with many expensive knives available in the market right now. Now let's talk about sharpening these knives. We use this stone to sharpen our knife. For Victorinox knife, we did not use it frequently, maybe once a year or when we need. But for other knives, we have to use it more frequently.
You just have to rub the blade of any particular knife once or twice in this stone and you are good to go. It's sharp enough. These three knives does our job and solve so many purpose. Whether the food items are big or small, they chop and cut perfectly. हमें किसी और नाइफ की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है. Let's compare the blades. This is just ordinary knife and आप देख सकते हो कि इसके blades बिल्कुल भी strong नहीं हैं. जब भी आप इससे chopping करोगे ये हिलते हैं. और ये है Victorinox का सबसे छोटा knife जिसकी blades काफ़ी sturdy हैं and strong हैं. जब आप chop करते हो तो ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है. Now where do you purchase it? मैंने यहाँ पे Amazon से कुछ searches करी और ये knives निकाली हैं. हमने भी Amazon से ही ऑर्डर किया था और इनफैक्ट 3 knives का सेट ऑर्डर किया था. जैसा कि आप देख सकते हो, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग द पेजेस फॉर यू so that you get a good idea. And when we purchased this particular knife, इसके 3 के सेट हमें 1000 और 1100 के रेंज में मिले थे. Right now I can see that price has dropped down somewhere around 800. आप इसे सिंगल पीस भी ले सकते हो. You just have to do your research and you will be good to see so many options within this particular brand. You can also opt for several colors because I can see that they have come up with various colors and choices for you guys. So do research out and make the investment if you are willing to. Choice is yours. अब आ गए हैं हम end of this video और जैसा कि मैंने कहा था, I have something special to share with you guys. So from 1st September, I would be uploading videos every day for 30 days. जी हाँ, आपने सही सुना. Every day you are going to get a new hit from me which will be called as Speedy Hit. So watch this space for additional videos to come through. With this, I have to end this video. I'll be back with something new next week. And obviously, every day for 30 days, you will be watching my videos here soon. Thank you guys. I'll see you. Bye. Take care.